Hello friends, I am KG Bhai, business expert, with latest updates and how it can benefit your business, what's happening in the business world around, latest updates and areas of business. Top 5 news from the MSME sector in the past few weeks. 1. Implications of Section 43B. 2. Account aggregator framework. 3. Indian MSMEs to form global supply chain of auto parts. 4. MSMEs are a force to contend with in the Indian economy. 5. Budget 2024 for MSME. 6. OCEN Open Credit Enables Network. Implications of Section 43B of the Income Tax Act, inserted by the Finance Act 2023, regarding payments to micro, small, and medium enterprises. Discover its applicability, effective date, time limits, and penalties for late payments. Gain insights into how this amendment aims to streamline payment processes, promote financial transparency, and benefit both MSMEs and larger enterprises. Stay informed to navigate tax planning and compliance efficiently. Let's take a look. इसका 45 डेज के अंदर पेमेंट करो, वरना उसके ऊपर भी आपको इनकम टैक्स देना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेक्शन 43B सबसेक्शन H यहाँ पे क्या बोलता है। तो देखिए, जितने भी छोटे बिजनेस होते हैं वो एक उद्यम सर्टिफिकेट ले लेते हैं, जो कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें मीडियम एंटरप्राइज को जो इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर लेट सपोज इवन उनके पास में उद्यम सर्टिफिकेट नहीं भी है, फिर भी अगर वो ये जो लिमिट्स के अंदर फॉल करते हैं, तो सिंपली तरीके से वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज में MSME एक्ट में जितने भी उनको बेनिफिट दिए जाते हैं वो सारे वो अवेल कर सकते हैं। तो अगर मैं माइक्रो की बात करूं तो जिनका भी टर्नओवर जो है 5 करोड़ है और प्लांट और इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ के नीचे होता है, और स्मॉल जो एंटरप्राइज होते हैं जिनका भी टर्नओवर जो है 50 करोड़ के नीचे है और इन्वेस्टमेंट जो है 10 करोड़ के नीचे, उनको इसके अंदर काउंट किया जाता है। इसके अंदर गाइस मैन्युफैक्चरर्स हो गए और सर्विस प्रोवाइडर को काउंट किया जाता है। जो ट्रेडर है वो उद्यम सर्टिफिकेट यहाँ पे जरूर बना सकते हैं, लेकिन उनको ना ये सेक्शन जो 43B सबसेक्शन H है उसका यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। बात करते कि यार ये MSME को क्या बेनिफिट्स यहाँ पे दिया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे आपको पेमेंट टर्म्स का बेनिफिट मिलता है। तो जितने भी आपके क्रेडिटर्स है आपको चेक करना पड़ेगा, जो भी MSME है आपको उनको 45 डेज के अंदर यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी। जी हाँ, अगर आप 45 डेज के अंदर यहाँ पे पेमेंट नहीं करते हैं और आपका फाइनेंशियल ईयर भी एंड हो जाता है तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। एग्जांपल देना चाहूंगा, ये 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल है। मान लीजिए आपने कोई परचेज की 1 Feb 2024 को, अब अगर मैं 45 डेज यहाँ पे काउंट करता हूँ तो 17 मार्च 2024 मेरी ड्यू डेट यहाँ पे बनती है। अब मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, 31 मार्च 2024 में यहाँ पे चली गई और मैंने जो है कोई भी यहाँ पे पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं किया अपने सप्लायर को, तो गाइस इस केस में क्या होगा, मेरा जो परचेज है वो मेरी इनकम के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। जी हाँ, मतलब एक तरह से मेरी जो परचेज है वो डिसअलाउ कर दी जाएगी, उसका मेरे को कोई भी डिडक्शन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 के अंदर। तो इनकम टैक्स जो है आपका प्रॉफिट के ऊपर लगता है। मान लीजिए आपका प्रॉफिट निकल के आता है 5 लाख रुपए, तो अगर मान लीजिए आपकी टैक्स ऑडिट हो रही है तो ऑडिटर जो है आपके इस परचेज को जो है डिसअलाउ कर देगा और इस परचेज के ऊपर आपके प्रॉफिट के अंदर ऐड होकर अल्टीमेटली आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना यहाँ पे पड़ सकता है। गाइस ये जो टाइम लिमिट है वो 45 डेज और 15 डेज की भी है। अगर लेट सपोज आपने अपने सप्लायर अपने क्रेडिटर्स के साथ में जहां से भी आप माल परचेज करते हैं जो MSME है उनके साथ में अगर कोई एग्रीमेंट बना रखा है तो ये टाइम लिमिट 45 डेज की है, लेकिन अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना रखा तो ये टाइम लिमिट जो है केवल 15 डेज की है। चलिए इसको कुछ बिल के साथ में समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने Feb 2024 के अंदर यहाँ पे माल जो है परचेज किया, आपकी ड्यू डेट जो है 17 यहाँ पे मार्च होनी चाहिए थी। अब आपने जो एक्चुअल जो पेमेंट की थी वो मान लीजिए 28 मार्च 2024 की है, यानी जब फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला था उसके जस्ट 2 दिन पहले आपने पेमेंट कर दी। तो देखिए आपको डिडक्शन तो जो है डेफिनेटली अलाउ हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑडिटर डेफिनेटली इसको अलाउ कर देगा। लेकिन आपने ये जो ड्यू डेट के बाद में जो डिले किया है ना, उसका आपको MSME को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इसी तरह से गाइस मान लीजिए आपने जो पेमेंट है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर की, ठीक है, तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो वो डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, लेकिन नेक्स्ट वाला जो 24 और 25 आपका फाइनेंशियल ईयर होगा उसके अंदर ये डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए आपने कोई Feb 2024 के अंदर यहाँ पे जो है कोई यहाँ पे गुड्स वगैरह बाई किए 20 तारीख को,
तो उसकी ड्यू डेट जो है 5 अप्रैल 2024 यहाँ पे होनी चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद में होनी चाहिए। और आपने पेमेंट भी ऑब्वियसली बात है दो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद में ही करोगे, लेकिन स्टिल उसका जो डिडक्शंस है आपको वो सेम फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि जो बिल है आपका वो आपने प्रॉपर तरीके से टाइम के ऊपर पेमेंट किया है, तो आपको उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा। गाइस यहाँ पे मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताना चाहूंगा। ये जो चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रेजेंटेटिव टैक्सेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, यानी वो छोटे बिजनेस जो अपनी हर साल जो है ITR 4 फाइल करते हैं, सिर्फ टर्नओवर दिखाते हैं और यहाँ पे प्रेजेंटेटिव बेसिस पे 6% 8% का प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं, तो भाई ये चीज जो है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए ऐसा कोई डिसअलाउंसेस नहीं होगा। वो नॉर्मली अपनी ITR 4 वगैरह यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। ये किन के लिए एप्लीकेबल है? जो ITR 3 फाइल करते हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखते हैं या जिनकी टैक्स ऑडिट होनी होती है, उनके ऊपर ये चीजें एप्लीकेबल है। In the evolving landscape of MSME financing, data-driven approaches are reshaping credit access. The JAM Trinity and UPI have provided transactional data enabling innovative flow-based lending and invoice financing. In a conversation with India Today, Satyam Kumar, CEO and co-founder of LoanTap Group, discussed how AI is shaping MSME lending in India. One account aggregator, revolutionize lending and wealth management. 2. DPDP empowers data control but raises concerns about licensing. 3. Integration hurdles persist but offer significant benefits. 4. Adoption is driven by data quality, security, and user awareness. 5. Account aggregator framework facilitates innovation across sectors. Take a look. Satyam, I also want that since you are a CEO of a new age NBFC and early adopter of account aggregator, so we want your comment on how your implementation has helped in achieving efficiencies, and if there is any particular impact, if you can, which you can tell to the audience, because that is more relevant. People want that people who have already implemented account aggregator framework, Sure. what they can see. So what it does is that it solves three things particularly for the lender. One, which everyone is looking forward, be it a customer or anyone, what they are looking forward is speed of decisioning. बता दो कितना लोन देना है और कब देना है. I mean, rather than keeping us moving from one place to another place. So it solves for the speed. It also solves for the hassle of picking up the document. I'm not sure how many of you have taken a home loan or something like that. You have to give a specific consent letter to the bank. A bank representative go to another bank. He will pick up the bank statement on your behalf for 6 months or a 12 month. You will go and submit, and then the loan process will start. It's not that loan plus process will get completed. So there's one is a TAT, the second is a user interface, and the third is the quality of underwriting, which is also prevention of a fraud. Because the moment you leave the bank statement to move between one channel to another channel, okay, there is a chance of manipulation, and that also has a both. I mean that has all kind of a risk. Okay. So the manipulation chance are near nil. Considering that these are the three basic parameters which any banking system does for an underwriting, and all those three things, account aggregator comes as a WAS solution. Okay, that's where we have used it, and on top of it, you know, if you can build an AI credit scores and all, then you get into a warm moment. And earlier, if you will see, most of the smaller loan, I mean, most of the loans was about. Unsecured loans was about sub 50,000 or a sub 1 lakh rupees limit, which comes to an instant. An account aggregator actually makes, without compromising on any data, all the loans, even up to 40-50 lakh rupees possible, because there is no other data more than the core banking data on which any banking system relies for the recency and the quality of underwriting. Indian MSMEs to form global supply chain of auto parts. Many cars in the world use components manufactured by Indian MSMEs. They are moving towards becoming a strong part of the global supply chain. About 7% of India's GDP comes from the automobile industry. Take a look.
MSMEs are a force to contend with in the Indian economy. These firms that can range from a single person unit to medium-sized companies that employ dozens of workers are the country's second largest job creator after agriculture, contribute a third of the GDP and 45% of national exports. It is estimated that there are more than 66 million MSMEs in India, with a little over 40 million being registered with the government as of 15th March 2024. Anil Bharadwaj, Secretary General of the Federation of Indian Micro and Small and Medium Enterprises, says MSMEs have seen a K-shaped recovery since COVID-19. Nirav Shah, founder of Zyapar, a networking platform for MSMEs, says the three key challenges are credit access, technology and digital adoption, and market access. Because of these challenges, there is a huge gap between what the MSMEs are doing and what they can do. From MSME sector has been like I think much of the industry has been K-shaped. Like some of the sectors have recovered or are on the path of recovery, but certain sectors which have been particularly sectors like tourism and the contact-intensive sectors, I mean, travel and tourism, etc. So they took a big hit, and but now they have started recovering. Certain segments who have been supplying to exports, and because exports are still not doing very well in the Western markets, and the economic growth there is somewhat subdued. So these sectors continue to face some kind of challenges, which includes MSME export-intensive sectors like garments, textile and garments, and light engineering, gems and jewelry, leather, etc. So, in a nutshell, I mean, some sectors have bounced back, and certain sectors continue to face some challenges because of the prevailing conditions, because of the war, and because of the issues that are related to low economy. The Indian government announces new strategies focused on fostering sustainable growth and development. Framework for the micro, small and medium enterprises and reforms. Following the principle, reform, perform and transform were discussed. Take a look. Facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. Orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix. OCEN, great initiative, though this is not recent, but comes from last year, yet is very important for MSME sector. This platform is called the Open Credit Enables Network, or OCEN. And this will solve the most critical problem for the MSMEs of India, which is the credit gap problem. Take a look at how it works. Of the product registry, I am defining a product on behalf of a lender, which is for a private dairy VDA financing. Whether the product is an end-use control or collections controlled. What
category of borrowers does it support? It supports sole proprietorship in this case. Most of the businesses in the sole proprietary space. Whether it requires account aggregator flow, it requires monitoring consent. Benchmark data will be provided by the dairy on past supplies of the borrower and the quality of milk metrics, the amount of milk supplied, and the money paid. Right. Once the product is defined, it is listed on the product registry. It could fuel a journey. I'm not going to go through the journey in detail, but I'm just going to quickly walk through a journey. The same VD already has a milk passbook kind of an app that is installed where they can check their payments and balances. It would have a loan tab. The loan tab, they could go ahead and check if there are any existing loans. They would go ahead and apply for a loan. Why do they want a loan? They would upload some ancillary files if required on the loan journey. With the consent, the dairies, which is a benchmark data provider or derived data provider in this case, going to provide the data directly to the lender. The account aggregator flow, I'm not going to go into details of the account aggregator flow. I'll just quickly walk through the account aggregator flow. At this point in time, the bank statements will be shared and the lender returns offers. There are various filters that a dairy provides to show which is a good application, which I have mentioned about it in the previous things. So you could select the offer, do my KYC. Now the lender would do it themselves or they would do it via the KYC partner available. There could be a tech provider on the platform. Set up a repayment account. In this case, we would use up a UPI mandate. And the money is in the backup. So we looked at the actors, we looked at the journey, we looked at the APIs and the product, how it is created. We'll delve into